हम्म। हाय। हाय भाई, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। 25,329 यहाँ पर चल रहा है अभी निफ्टी। और अभी तो अनसर्टेन ही रहने वाला है प्राइस। अगर देखें, बड़ा मूव देखें, एक्सपेक्ट करें, तो अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं। तो कुछ जो ये बजट होता है ना, इसमें लेवल्स इतने वर्क करते नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली मैं बोलूँ, कोई टेक्निकल एनालिसिस इतना वर्क नहीं करता। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आज ट्रेड ना करो। एक ही दिन में रोम बनाने की कोशिश मत करो कि आज ही सारे आप चीर फाड़ कर दोगे। ठीक है ना। ट्रेडिंग डे बाई डे का गेम है, एक दिन का है नहीं। तो मैं तो बिल्कुल यही सजेस्ट करूंगा, ट्रेड मत करना आज। बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में। Yeah, so going back to the stage. और बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है। बाकी हालांकि थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है निफ्टी को कि कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है, कितना बड़ा मूव दे सकता है। बट अभी के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना। जब तक मैडम बोलेंगी नहीं तब तक यहाँ पे कुछ नहीं करना है निफ्टी में। ठीक है। एक जो पहला मूव, एक मेजर मूव होता है ना, वो उसका वेट करना होता है हमेशा कि एक मूव आ जाए, तब देखते हैं कि रिवर्सल प्ले करना है या उसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। तो अभी शुरू पहले से एंट्री ले लेके मत बैठ लेना। ठीक है। और बहती गंगा है, बस उसमें तो हमें कुछ लोटे पानी निकालना है। सारी गंगा अपने घर नहीं लानी, सारी नदी हमको अपने घर में नहीं लानी है। और हमारा तो मोटो ये रहता है, हाउ अबाउट बेल। ओके। पीएल। सारी नवरत्न कंपनियां ये सब इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहता है बिल्कुल। इसमें तो पहले ही वीकली ब्रेकआउट आ चुका है, आप देख सकते हो। मंथली ऑलरेडी बुलिश है यार। अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। सॉरी। अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है अभी तो यार। और इसी वीक ने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब वीक खत्म नहीं हो रहा है। इस डिमांड जोन तक पुल बैक देखो, इसका मैं ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि बिल्कुल लाइव देखो, जो जितने भी चार्ट्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं ना, और एज ऑफ नाउ उसमें तुम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। देखो आप, हर स्विंग तोड़ के निकल रहा है, तो टारगेट तो कोई बनता है ही नहीं भाई। ठीक है। देखो, बट अगर मतलब वैसे अगर इंट्राडे पे बाइंग करनी है, इंट्रा मुझे नहीं पता कि आप किस व्यू से पूछ रहे हो, लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो या इंट्राडे के हिसाब से पूछ रहे हो। हम्म, एक अच्छी बाइंग तो यहाँ बनती है भाई, इस जोन में। इस जोन के नीचे। और मैं यार आप एक चीज़ और बता दूं, देखो आज जैसे मार्केट है, आ, आज सर्किट्स लगने वाले मार्केट में, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें सर्किट्स लगेंगे, तो इंट्राडे पे कोई पोजीशन में यहाँ पे इंट्राडे। देखो मैं, हाँ, वही समझा रहा हूँ। देखो क्या है ना कि कुछ स्टॉक्स जो कि आधे गवर्नमेंट लिमिटेड स्टॉक्स है ना, जैसे कि एचएल हो गया और ये बेल वेल हो गई, इनमें क्या है ना, स्टॉक्स में क्या है कि सर्किट लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, बड़े मूव आने की चांस। तो ऑक्शन के थ्रू फंस मत जाना, मतलब कि आप एंट्री ले लो और उसमें सर्किट लग जाए और आप एग्जिट ना कर पाओ। ठीक है ना, तो बहुत बुरे फंसोगे। निफ्टी का व्यू क्या है? निफ्टी
जो भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना निफ्टी को, मुझे एक इसमें एक बुलिश मूवमेंट लग रहा है। और ये वाला जो जोन है, ये पूरा जोन है, ये यहाँ तक प्राइस आ सकता है, इस जोन तक। क्योंकि प्राइस ने ये वाला स्विंग लिया है, स्विंग लिया है नीचे, एंड देन अगेन फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है। और अगर अगर प्राइस शार्पली फॉल, अगर मान के चलो प्राइस शार्पली फॉल करता है ना, तो 24,919, ये वाला लो नहीं बचेगा। ये वाला लो पहले भी अभी तक टैप नहीं हुआ है। जो पहला लो बना था ना फॉल के बाद में, ये वाला लो, ये इस वाले फॉल में भी टैप नहीं हुआ है। ठीक है। तो जो मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है ना, प्राइस इस जोन तक, यहाँ तक पुल बैक दे सकता है, इस जोन तक, यहाँ तक, इस जोन तक प्राइस आज ही आ जाएगा। एशियन टाइटन का भी व्यू बताओ। आप इंट्राडे व्यू पूछ रहे हो ना मेरे भाई? ठीक है। टाइटन बेहतरीन, बहुत सही, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है टाइटन में तो। गुड। देखो भाई गौर से देखना, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सारे हमारे ऑर्डर फ्लो हैं ही। ओके ओके, ड्रॉप दे दिया है। देखो बाई चांस अभी बड़े मूव आना स्टार्ट होंगे स्टॉक्स में सब में, ठीक है ना। अगर बाई चांस प्राइस यहाँ से ये 38, जो ये वाला लो है 3842 वाला, ठीक है, ये तोड़ता है, ठीक है, प्राइस क्या करता है, शार्प रैली में तोड़ता है और वहां से रिवर्सल देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइटन बाइंग करना है, बट डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से इस लो को तोड़ रहा है। बट अगर मैं देखूँ ना, अगर बहुत अच्छी जो बाइंग है वो इस लो के, ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो, ये लो, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का लो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब जो ये पूरा जोन है ना, ये यहाँ से अगर आप जो सेल कर रहे हो ना, तो मत करना सेल। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि टाइटन में सेलिंग अभी मत करना, ठीक है। और अपने जो भी बुलिश सेटअप है वही देखना। और अगर ये वाला लो टूटता है नॉर्मली, तो यहाँ से आपको एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसने रिवर्सल दे दिया है। ओके, वैसे इस पूरे जोन में, इस पूरे जोन में ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये यहाँ से भी आपको रिवर्सल दिख सकता है। कहने का मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि जो ये हमारा टाइटन है ना, इसको अभी आप सेल मत करना। ये जो पूरा जोन ही है, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, ठीक है ना, उसमें उसी तरीके से रिवर्सल है। यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफ भी है। तो यहाँ से अभी आप सेल मत करना, इसको किसी भी एंगल से सेल मत करना। टाइटन को हो गया इसका जितना होना था, अब बाइंग करके चलना है टाइटन को। एंड निफ्टी में आ जाते 320,
और इतना पहले हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि अभी संडे को खुल रहा है मार्केट, आप ऐसे देखो, ठीक है ना। टाइमिंग क्या है इसका बजट का यार? लाइव बजट। हाँ, अप्रोक्स 11 बजे से मैम की स्पीच है, ठीक है ना। उसके बाद से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। देखिए प्राइस 25,600, और ये जो पूरा जोन है ना हमारा, जहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आपको दिखेगा थोड़ी देर में, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आपको मूव करता हुआ नज़र आने वाला है, ठीक है। इसने भी वीकली ऑर्डर ब्लॉक को डन किया है, पुल बैक एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट लेवल में बता रहा हूँ। निफ्टी आपको पुल बैक देते हुए नजर आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शार्पली निकल जाएगा, बट आपको यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा निफ्टी में, बहुत प्यारा वाला, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जो हम यहाँ पे बाइज रख रहे हैं निफ्टी के लिए, वो बुलिश के बाइज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी ट्रेड प्लान करना, आप सेलिंग के हिसाब से मत प्लान करना, ठीक है। निफ्टी में आपको बाइंग दिखेगी, और आज थोड़ा सा मार्केट रिस्क की रहने वाला, आपको पता ही है यार, ठीक है। तो बेटर होगा कि ट्रेड ना करो आप।
निफ्टी में आपको बाइंग दिखने वाली है, पुल बैक दिखेगा आपको निफ्टी में। और दो लेवल है, दिखा देता हूँ कौन से। बस सब। हाय ओडिन भाई, कैसे हो यार, बहुत दिनों में। चेक बीटीसी 78। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहा है वो, वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे। 74,506। इसको तोड़ने का वेट कर रहे हो क्या? मैं आपको सच बताऊं, पता नहीं तुम्हारा क्या व्यू होगा यार ओडिन, पर मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन का जो फॉल है वो हो लिया ख़त्म इस लो को टूटने के बाद में। मंथली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यार, बहुत ज़्यादा। एक फॉल और आएगा भी बिटकॉइन में इस लेवल तक, बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है प्राइस यार। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिटकॉइन बहुत अच्छा है, अभी मैं बता रहा हूँ। हम्म। नेक्स्ट फोन साइज 0.5 हो गए हमारे। निफ्टी में पुल बैक आएगा भाई। निफ्टी आपको पुल बैक दिखाएगा। निफ्टी में कोई सेल मत करना, सेलिंग मत करना निफ्टी में अभी। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है इसमें, काश ये वाला लो टूट जाता।
निफ्टी में भी कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट और बचा हुआ है, ठीक है। वो पुल बैक देगा, ये कन्फर्म है। तो निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती मत करना अभी, ठीक है। जो बाइज आप रखोगे वो यहाँ पर बुलिश बाइज रखना है। और रिस्की होता है यार आज के दिन काफ़ी ट्रेड करना, तो मैं तो बोलूँगा ट्रेड मत करना आज। बट अभी बाइस जो है वो बुलिश रख के चलना निफ्टी में, वो आपको हेल्प करेंगे ट्रेड एक्सिक्यूट और फाइंड करने में, ठीक है। अगर आप गलत बाइस पकड़ के चलोगे तो यहाँ पे एसल जाएंगे आपके। प्राइस ने ये वाला जोन लिया था, देन उसके बाद मूव एंड दे रहा है, ठीक है। ये वाला इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस मूव कर रहा है, और नेक्स्ट इंड्यूसमेंट है 25,456। ये तो आना ही आना है, देखो 25,000 ये वाला टारगेट तो आना ही आना है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। एंड प्राइस उसके ऊपर भी निकल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखेगा 25,000, लगभग लगभग 70 पॉइंट अभी आपको दिखेंगे निफ्टी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 11 बजे से तो मैडम की स्पीच स्टार्ट हो जाएगी, तब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी वॉलेटिलिटी। तब तक आप शांत बैठ सकते हो।
देखिए 25,458 जो ये हाई बनाया था, ये होगा मेरे हिसाब से फ्राइडे का हाई, थर्सडे का हाई। यहाँ तक अभी हमको टारगेट रखना है छोटा, तो लगभग लगभग 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमको मिलने वाला है निफ्टी में। और ये जो पूरा गैप था, ये जो पूरा गैप है वो फिल हो चुका है। थोड़ा सा गैप अभी बचा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी 100 पॉइंट आपको मिलने वाले निफ्टी में, ठीक है। 100 पॉइंट्स का मूव आपको मिलेगा निफ्टी में। प्राइस ने ओपनिंग के साथ में, फ्राइडे को ओपन हुआ था, इतना मूव दिया, और आज का चल रहा है। तो क्या आज तो क्या अभी वॉलेटिलिटी है ही, देखो अब तो प्राइस एक्शन का मतलब नहीं है। बट अगर हम वैसे देखें ना कि भाई लिक्विडिटी के हिसाब से या जो भी है, तो 25,458, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का मूव आपको दिखेगा निफ्टी में, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि कोई एंट्री अगर पॉसिबल एंट्री है, तो देखो जो ये वाली थी, क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अगर मतलब एक परफेक्ट आइडियल एंट्री के हिसाब से हम बात करें ना, तो ये एंट्री हो चुकी है। एंड जो टारगेट है ना, वो ये है। अगर अब यहाँ पे तो मैं देखूँ क्या ये एंट्री, मुझे तो लग नहीं रही। और एक बात और है, अगर अभी प्राइस ड्रॉप होता है, मान के चलो यहाँ से ड्रॉप होने लग जाता है प्राइस, तो फिर ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से पुल बैक आ जाएगा या जो भी है, तो फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना। देन फिर एक हमारा लेवल, हमारा ये वाला जो है, ये एक हमारा इंड्यूसमेंट बन रहा है, ये वाला, इसको मैं अभी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। ये तो देख के चलना, अभी के लिए आप यहाँ पे निफ्टी को बुलिश रख सकते हो इस टारगेट के लिए। जो बाइज है निफ्टी का अप टू हियर, वो बुलिश रहने वाला है।
निफ्टी में आपको बुलिश बाइज लेके चलना है, कोई टेंशन नहीं है। ये आपको टारगेट दिखेगा 25,456, या 58 आपको दिखने वाला है निफ्टी में। और वैसे भी 8 ही मिनट बची हैं, स्पीच स्टार्ट होने वाली है, तब आपको वॉलेटिलिटी दिखने वाली है मार्केट में। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या होता है। बट मैं आपको बोलूँगा, आपको इस चीज़ को थ्रिल मत बनाओ। आज के दिन ना ट्रेड करो तो बेहतर होगा। को उन तक प्राइस स्लोली स्लोली टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, 25,458। ठीक है, एंड 22 तो हमारा बुलिश है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है ना। तीन मिनट बचे हुए हैं और यहाँ पे स्पीच स्टार्ट होने वाली है। ठीक है।
थोड़ी देर में बजट स्टार्ट होने वाला है, स्पीच स्टार्ट हो जाएगी एंड देन देखते हैं क्या एक्शन रहता है मार्केट में। प्राइस का जो बाइज है वो बुलिश रहने वाला है 25,458 तक, ठीक है। बट कॉशियस रहना, बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है मार्केट में आज, ठीक है ना। 11 बजे से मैम की स्पीच है, तो आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। प्रीवियस प्रीवियस टेबल, जो हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल है ना, वो है मंथली स्विंग हमारा यहाँ पे है। स्टार्ट हो चुका है। अभी वॉलेटिलिटी आने वाली है मार्केट में। मैम ने स्टार्ट कर दिया है अपना बजट। देखिए बड़े बड़े मूव्स आपको दिखने वाले हैं मार्केट में, ठीक है ना। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मतलब मेजर हायर टाइम फ्रेम पे बोलूँ, हमारा प्रीवियस वीक हाई है 25,658, लगभग लगभग 1200 पॉइंट दूर है यहाँ से, 1300 पॉइंट। और एक हमारा वीकली स्विंग है, वो है मंथली स्विंग है 24,343। तो प्राइस अब हमको देखना ये है कि अगर अगर प्राइस में पुल बैक आता है वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, तो क्या प्राइस इस जोन में जाना पसंद करेगा या नीचे फॉल बैक करना पसंद करेगा। तो बहुत
मज़ा आने वाला, मैं आपको सच बता रहा हूँ, असली मज़ा आएगा आज प्राइस एक्शन का। और हम टेस्ट करेंगे अपने आईसीटी नॉलेज को भी कि कहाँ तक मूव कर सकता है, और मैं कोशिश करूँगा हर एक लेवल को प्रिडिक्ट करने की। तो आप यहाँ पे लाइव बने रहिए, सीखने की कोशिश यहाँ पे कर। ट्रेड का हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आज के मार्केट में, ठीक है। बेहतर हो कि ट्रेड ना करें, आप लेवल्स को आज देखने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में कि इतनी वॉलेटिलिटी में भी क्या लिक्विडिटी काम करती है या नहीं, हमको आज ये देखना है। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, ठीक है ना। तो मैं अभी एकदम स्पीच स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं क्या होता है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, पीक पे होने वाली है वॉलेटिलिटी भी। टू वन सेवन सिक्स एट टू। चौबीस। अभी आपको बुलिश बाइस रखना है निफ्टी में। ये जोन टैप हो सकता है, प्रीवियस वीक हाई भी है अभी अवेलेबल है, लगभग 150 पॉइंट दूर, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली देखने की कोशिश करें तो जो मेजर लिक्विडिटी अवेलेबल है ना वो ऊपरी साइड में है। प्रीवियस वीक हाई है, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एंड प्राइस ने वीकली बाइस भी टैप कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर हम, जहाँ तक मैं सही हूँ, यहाँ पे अभी आपको एक अच्छा मूव दिखेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बट सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेट देखते हैं होता क्या है।
25,394, 25,408। प्राइस आपको ऊपर ज़्यादा हुआ नज़र आएगा, बुलिश बाइज है। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, प्राइस आपको ऊपर ज़्यादा नज़र आने वाला है। तो अभी आपको जो भी ट्रेड्स होंगे, आप यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड्स लेनी है गाइज, ठीक है। 25,417, आई होप 25,400, 25,421, 58 का टारगेट शायद आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, इसी कैंडल पे आ जाना चाहिए। देखिए 428, जैसा मैं बोल रहा था कि प्राइस जो है बुलिश, अभी उसका जो बाइस है बुलिश है, तो एटलीस्ट 25,456। एंड इवन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और प्रीवियस वीक हाई जो 25,650 पे है, वो भी यहाँ पर टैप होता हुआ नजर आएगा। एंड 25,456 वाला जो मैं बोल रहा था टारगेट, वो आने वाला है, ठीक है। तो आपको आज ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप गलत ट्रेड भी ले रहे होगे तो हम हैं यहाँ बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। प्रीवियस वीक हाई 25,650, ये आपको आता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। अभी देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। अभी मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से बेयरिश रिएक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव दिखेगा ऊपर की तरफ। केवल दो तरीके हैं, या तो प्राइस स्ट्रेट वे जाएगा, या एक बार ड्रॉप करके 25,932 को लेने के बाद में प्राइस रिवर्सल देगा। बट मोस्ट प्रोबेबली प्राइस आपको बुलिश दिखने वाला है। सो नो सेलिंग, कोई सेलिंग नहीं करनी है आपको, कोई पुट बाइंग नहीं करनी है। रिएक्शन आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट में रिएक्शन आपको मिलेंगे आज के मार्केट में। बुलिश बाई रख के आपको ट्रेड करना है निफ्टी को, किसी भी एंगल से सेलिंग नहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो जोन था हमारा, प्राइस शायद अभी आपको दिख जाएगा थोड़ी ही देर में, जो 25,600 के आसपास का टारगेट है, वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी।
निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है आपको, बुलिश बाइज रखना है निफ्टी को। शॉर्ट करने की गलती मत करना, बड़े बड़े मूव्स दिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मूव्स यहाँ पे हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको निफ्टी को यहाँ पर जो उसका बाइज है वो बाइंग का रखना है फिलहाल। कोई भी ऐसा लेवल टैप नहीं हुआ है फिलहाल जो हमको बता सके कि हम यहाँ पे सेल की तरफ जाएं। इसलिए बेटर यही है कि जो भी आपकी एंट्रीज बनेंगी वो बाइंग साइड में बनेंगी। बट जो भी चल रहा है प्राइस 25,399, ये कोई लेवल नहीं है। एक्टिवेट अगर बाइंग के लिए अच्छी एक्टिवेशन चाहिए, 25,150 के नीचे अगर प्राइस निकलता है और वहां से अगर आपको पुल बैक दिखाता है तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी बाइंग बनने वाली है। और अगर कोई ऐसी कैंडल बन जाती है जो कि इस लेवल को तोड़ देती है 24,923, देन यहाँ पे एक हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी तो प्राइस बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई भी लेवल नहीं है हमारा। बट यहां पे अभी आपको निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores and continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to
One, establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Agar and industrial centers like Kalinga to the ports of Paradip and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem. बुलिश बाइज रख के चलना है निफ्टी को, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा लेवल हिंट नहीं हो रहा है अभी जो हमको बताए, so don't worry. Scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from. हमको बस वेट करना है कि कोई एक ऐसा जोन यहाँ पे हिट हो जहाँ पे हमको लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नजर आए, बट अभी के लिए फिलहाल अभी आपको बुलिश बाइज रख के चलना है. आई होप कि प्राइस कोई सडन कैंडल बनाए और इस लोगो तोड़े. 25,165 बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड हैं आज, कोई टेंशन नहीं है. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve 25,375 चल रहा है अभी आपको होल्ड करना है. अभी कोई लेवल अभी यहाँ पे गया नहीं है, अभी के लिए आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है निफ्टी में. एक हमको रिएक्शन चाहिए मार्केट से, उसी का हम वेट कर रहे हैं. आपको भी वही करना है, रिएक्शन का वेट करना है आपको निफ्टी में. अभी फालतू में इधर उधर नहीं घुसना है. अभी इसको ये स्पीच खत्म हो जाए, रिएक्शन आ जाए, उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे. तो जल्दबाजी नहीं करना आपको, कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है. अभी जल्दबाजी मत करो. जब तक प्राइस झकझोड़े नहीं तब तक एंट्री नहीं लेनी है. Specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector, align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption.
in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector in DFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit अभी कोई एंट्री नहीं लेगा, रिएक्शन का वेट करो, मार्केट में रिएक्शन आने दो, प्राइस को मार्केट में रिएक्शन आने दो, तब हम वेट अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तब तक अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक रिएक्शन का वेट करना है निफ्टी में। Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and the younger to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan, National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second karte is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors: health,
Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new अभी AHP आपको रिएक्शन का वेट करना है, निफ्टी में कुछ नहीं करना है ज्यादा, रिएक्शन का वेट करो। will cover 10 selected ये बोरिंग होगा, बोरिंग लग रहा होगा, बट अभी रिएक्शन का वेट आपको करना है, anesthesia देन हम एक्टिवेट होंगे। अभी हम बुलिश बाइज लेके चल रहे हैं निफ्टी में, and behavior तो अगर एक अच्छा लेवल आता है हमारा तब हमें एंट्री प्लान करेंगे। अभी के लिए एक रिएक्शन हमको चाहिए मार्केट में। अभी प्राइस बिल्कुल रुक चुका है, थम चुका है, ठीक है, जैसे तालाब में पानी रुका हुआ था उस टाइप से रुका हुआ है। हमको वेट करना है अभी एक रिएक्शन का। variety of SQF बस मैम कुछ बोले और इसमें कुछ ऐसा रिएक्शन आए to train तब हमको एक्टिवेट होना है। तो क्या करना है अभी? अभी हमको वेट करना है, भाषण सुनना है और चार्ट को देखना है, अपने लेवल का वेट करना है। उंगली मत करो, कुछ भी उंगली मत करो अभी चार्ट पे, मैं बता रहा हूँ। coming year आराम से बैठो, शांति से बैठो, ठंडा वंडा पियो, चाय वाय पियो, वेट करो, लेवल को आने दो, वेट करो। अभी हम बुलिश बाइज लेके चल रहे हैं निफ्टी में। medical value अभी एक हमको एक रिएक्शन चाहिए, सिंपल है। medical tourism services. I propose to और भूलना मत, ये आज का दिन ऐसा दिन है, ये आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। 1 मिनट की कैंडल आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकती है। these hubs एसएल तक स्किप हो जाते हैं, एसएल भी नहीं लग पाता और प्राइस ऊपर से निकल जाता है। तो वेट करो, अभी एक रिएक्शन आने दो मार्केट में। facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, आपको वेट करना है अभी, center for diagnostics. जल्दबाजी में आपको अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करना है, वेट करना है अभी। Hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India.
Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industry and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and collaborative and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital or capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. Telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, for its earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. 3. Bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhigarhi, Adichanallu, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides.
The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Kalo India program earlier, I propose to launch a Kalo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering the young Jan through access to livelihood opportunities, assisted devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with replacing and non-productive trees. रिएक्शन आ रहा है जिसका हम वेट कर रहे थे, वो रिएक्शन आपको दिख रहा है मार्केट में. States. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa. India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and Indian cashew and Indian cocoa to premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards,
and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value गो addition टू सेटिंग by engaging एप्स. youth. अच्छा एप्स में भी जाना है. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, she marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try, and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President.
As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you allowed me to do at the commencement of the session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I'm happy to inform this August House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crore. Budget estimates हाँ बोलिए. as 36 1.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker said, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly,
giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a tax, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. To integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order, there will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Quantum of prepayment is being reduced from 20%
to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% वाइट tax चाहिए मुझे, rate वाइट. over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. Proposed to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offenses will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. राइजन ने रिएक्शन देना स्टार्ट किया है. लेट्स वेट, थोड़ा वेट और करना पड़ेगा हमको. हालांकि लेवल पर आ चुका है पर थोड़ा सा वेट हमको और करना है. यहाँ पे 25,160 का एक बहुत ही क्लियर एक लो है. देखते हैं क्या होता है. अभी स्टिल हमको वेट करना है. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by notified National Cooperative Federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice.
For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement APA, I propose to fast track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified terms available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. Harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing. I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tender leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options
are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax. So there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to export from shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product मैंने दो लोन लिए थे एक पे, ठीक है, एक 50 वाला बंद कर दिया, अभी 9 leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG.
Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overhaul requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system
with a self-declaration, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of imported cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance